Students, we are on the second grammatical topic of chapter number 12 and the topic is types of sentences. Students, we have already done types of sentence in our previous chapter, but that type of sentences is actually function wise. That's like assertive sentence, like interrogative sentence, question sentence, imperative sentence. All of these types are known as types of sentences but function wise. According to ये जो function कर रहे होते हैं, इनका जो मतलब होता है, इसके जरिए हम इन types को divide करते हैं 4-5 types में. Now here types of sentences but structure wise. Structurally क्या types हैं sentence की और उनको कितने parts में divide किया गया है, वो कितनी types हैं. So students, structurally, a sentence can be divided into 3 main types. A simple sentence, a compound sentence, and a complex sentence. First, we will go with a simple sentence. A simple sentence consists of one independent clause. एक simple sentence सिर्फ और सिर्फ एक independent clause पे मुश्तमिल होता है. And an independent clause contain a subject and a verb and express a complete thought. एक independent sentence या एक independent clause वो clause होती है जिसमें अपना एक subject होता है, एक verb है और वो एक complete thought convey कर रहा होता है, उससे एक पूरी thought process convey हो रहा होता है, communication का जो mean है वो convey हो रहा होता है, उसको हम independent clause या independent sentence कहते हैं. For example, simple sentence are I like coffee, Ali likes tea, the earth goes round the sun, Ali did not go to the party. All of these sentences are the simple example of simple sentences because they are conveying only one independent clause. Now, the next type is compound sentence. A compound sentence is 2 or more independent clauses joined by a conjunction or a semicolon. A compound sentence वो सेंटेंस होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ी हो, लेकिन वो किस तरह ज्वाइन हो, या तो वो कंजंक्शन से ज्वाइन हो या फिर वो सेमीकोलन से ज्वाइन. ईच ऑफ दीज 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कुड फॉर्म अ सेंटेंस अलोन. हमारे लिए ये जरूरी है कंपाउंड सेंटेंस के लिए कि उस सेंटेंस में दोनों क्लॉजेस का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि दोनों क्लॉजेस बगैर एक दूसरे पे डिपेंड किए अपना मीनिंग कन्वे कर सके. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कॉफी एंड मैरी लाइक्स टी. नाउ हियर in this example, both of these clauses are independent, like I like coffee and Mary like tea, but joined together with the help of conjunction. And Tabish went to work, but Ali went to the party. Here again, both of these clauses are independent but joined with a conjunction. But our car broke down, semicolon, we came last. Here again, both of these sentences, both of these clauses are independent, then they can stand on their own but joined together with the help of a semicolon. Student, keep in the mind that the conjunction are fanboys like for, and, nor, but, or. So, all of these words are known as conjunctions. And the last is complex sentence. A complex sentence consists of an independent clause plus a dependent clause. A complex sentence में unlike compound sentence एक सेंटेंस का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, लेकिन दूसरे सेंटेंस का या दूसरी क्लॉज का डिपेंडेंट होना निहायत जरूरी है. यानी कि एक सेंटेंस में अगर एक क्लॉज इंडिपेंडेंट है और दूसरी क्लॉज डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रही है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, दैट मींस वी आर डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कीप इन माइंड दैट अ डिपेंडेंट क्लॉज ऑलवेज स्टार्ट विद अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और अ रिलेटिव प्रोनाउन and contains a subject and a verb but still doesn't express a complete thought.
हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज अपना सब्जेक्ट और वर्ब तो लेके आती है लेकिन कोई प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं करती, क्योंकि उसका प्रॉपर मीनिंग को कन्वे होने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज को समझना ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, वी मिस्ड आवर प्लेन बिकॉज वी वर लेट। In this sentence, we missed our plane is an independent clause. Here, after that, there is a subordinate conjunction because. Students, let's have a look on this clause, we were late. Students, आपको हम लेट थे इस बात का समझ नहीं आएगा उस वक्त तक जब आप पिछली क्लॉज को जो इंडिपेंडेंट है उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अपना प्लेन मिस कर दिया क्योंकि हम लेट हो गए। He left in a hurry after he got a phone call. So student, this was all from this concept: simple sentence, compound sentence and complex sentence. Let's repeat this in this way, that a simple sentence consists of only one independent clause. Then a compound sentence consists of two independent clauses, and complex sentence consists of an independent clause and a dependent clause. I hope आपको ये concept समझ आया होगा. Let's move to the summary of this chapter.